Hello everyone, I am Ubaid Siddiqui and welcome back to my channel. As you know कि आजकल Nobel Prizes announce हो रहे हैं, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए I feel great to share this news that this year the Royal Swedish Academy of Sciences has awarded this prestigious prize to two beautiful ladies for their outstanding contribution towards the development of genome editing methods. चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज यानी 7 अक्टूबर 2020 नोबेल प्राइज केमिस्ट्री का दिया गया एंड द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज दिस टाइम अवॉर्डेड दिस नोबेल प्राइज टू टू साइंटिस्ट्स Emmanneul Charpentier and Jennifer A. Doudna for the development of method of genome editing. Now let's first look at our Nobel laureates. The first is Emmanneul Charpentier. She is born and brought up in France. Or currently she is affiliated with Max Planck Unit for the Science of Pathogens that is in Berlin, Germany, and she has been awarded half of the prize for the development of methods of genome editing. आगे जाके हम डिटेल में बताएंगे कि इन्होंने किस चीज़ पे काम किया था। फिलहाल एक जनरल इंट्रोडक्शन है नोबेल लॉरेट्स का एंड अनदर हाफ ऑफ द नोबेल प्राइज इज शेयर्ड बाय जेनिफर ए डोडना. Yes, this year two women have been declared winners for Nobel Prize Chemistry, and she is from USA, Washington DC, USA, currently affiliated with the University of California, that is in Berkeley, California, and she has done outstanding job in genome editing. Now let's talk about their work. As we know that they developed methods for genome editing. तो हमको पहले मालूम होना चाहिए कि what is genome editing. So, genome editing is a technique where we modify DNA of an organism or a living cell. इससे क्या होता है कि हमारा जो DNA है यानी जीनोम होता है सेट ऑफ DNA क्रोमोसोम्स जो हमारी बॉडी में है, तो उनकी एडिटिंग यानी कहीं पे अगर कोई एबनॉर्मेलिटी है या कोई और चीज़ जो है ऐड करना चाहते हैं या कट करना चाहते हैं, तो दैट टेक्निक इज कॉल्ड जीनोम एडिटिंग. इसमें क्या होता है कि वी कट DNA एट स्पेसिफिक सीक्वेंसेस और जिस चीज़ से हम वो करते हैं दैट्स एन एंजाइम. उस एंजाइम का नाम होता है न्यूक्लियसेस. वी कॉल देम इंजीनियर्ड न्यूक्लियसेस. सो जीन एडिटिंग दैट कैन बी यूज्ड टू ऐड और रिमूव और ऑल्टर DNA इन अ जीनोम. और जब हम DNA को एडिट करते हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट सेल और ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दे चेंज. सो वट एवर वी प्रेफर वी कैन ऐड those characteristics or we can take away the characteristics of an organism by genome editing. So why do we do this genome editing? It is another question. So there are many reasons for that. पहले ही बात है कि रिसर्च के लिए जब हम DNA तक पहुंच गए, DNA में चेंज ला रहे हैं सेल्स में, ऑर्गेनिजम्स में, तो पहली बात यह है कि रिसर्च फॉर रिसर्च पर्पसेस टू अंडरस्टैंड द बायोलॉजी एंड हाउ द ह्यूमन सेल ह्यूमन DNA वर्क्स और एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर दैट मैटर. तो उस पहला पर्पस हुआ कि जीनोम एडिटिंग हम रिसर्च पर्पस के लिए कर रहे हैं. एंड अनदर बिग थिंग इज हेयर जीनोम एडिटिंग का सबसे बड़ा जो कारनामा है दैट इज टू ट्रीट डिजीजेस. हमने देखा है जब से जीनोम एडिटिंग आया है वी हैव बीन सीइंग एनफ वर्क बीइंग डन इन मॉडिफाइंग द जीनोम ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स in treating various diseases that were earlier uncurable. So to treat diseases, we modify human blood cells and those cells are then put back into the body, जिससे हम जो है बाकी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं which are genetic but we are now able to cure them by this genome editing. जैसे ल्यूकेमिया है, ब्लड कैंसर, आपका एड्स हो गया एंड सिंपल जेनेटिक कंडीशन जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गई आपकी विद एज, योर मसल्स गेट वीक, या हीमोफीलिया हो गया व्हेन योर ब्लड इज अनेबल टू क्लॉट. तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं विच आर जेनेटिक. तो जेनेटिक बीमारियां जो होती है दे पास ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. तो उन चीज़ों को क्योर करने के लिए देयर इज़ नो सच मेडिसिन. तो उस चीज़ को हम जेनोम एडिटिंग के थ्रू जो वहाँ पे जो है जीन होगा या DNA में प्रॉब्लम होगी, डिफॉर्मिटी होगी वहाँ पे, दैट वुड बी कट डाउन थ्रू दिस जीनोम एडिटिंग. एंड दिस जीनोम एडिटिंग हैज़ बीन यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी ऑल्सो. अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर में इसका बहुत बड़ा यूज हुआ कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हमने बनाए जिसकी वजह से जो है एक तो यील्ड हमारा बढ़ गया एंड देयर रेजिस्टेंस टू डिजीजेस एंड ड्रॉट दैट वाज इंक्रीज्ड. Even we came up with genetically modified cattle. So this is why genome editing is important. So now the question arises कि कैसे करते हैं genome editing? How is this procedure? How do we do it? So in genome editing, what we do is we use some enzymes, particularly engineered nuclease. As I said earlier,
which cuts the genome in a specific place. आपका जो डीएनए है, सपोज वहां पे किसी जगह उसमें कोई डिफॉर्मिटी है, किसी क्रोमोसोम में, किसी इसमें जीन में वहां प्रॉब्लम है, तो उस जीन की वजह से जो है आपका डिफॉर्मिटी होता है, हीमोफीलिया है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, या फॉर दैट मैटर कोई ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जो किसी पर्टिकुलर जीन में है। तो उस चीज को ठीक करने के लिए स्पेसिफिक जगह पे डीएनए को रिपेयर करना है, तो दैट इज हाउ जीनोम एडिटिंग हेल्प्स। तो वहां पे क्या होता है कि हम न्यूक्लियसिस जो है इससे जीनोम एडिटिंग करते हैं। तो आवर न्यूक्लियसिस इट हैज टू पार्ट्स। एक तो डीएनए टारगेटिंग पार्ट है, जो डीएनए हमें ठीक करना है, वो उस डीएनए को, उस सीक्वेंस को जो देखता है, पहचान लेता है कि यहाँ पे डिफॉर्मिटी है, तो वहां पे बाइंड होता है। जो ही बाइंड हो गया तो उसके बाद एक और पार्ट जो होता है इसका, दैट कट्स द डीएनए। वो कैंची की तरह काम करता है और डीएनए को उस जगह कट कर देता है। When the DNA is cut, उसके बाद जो है रिपेयरिंग का काम सेल खुद ब खुद कर देती है, ठीक है। तो जो वहां पे डिफॉर्मिटी थी, द जीन दैट वाज देयर विच वाज कॉजिंग द डिफॉर्मिटी देयर, वो हमने निकाल दिया। अब जब है तो उसकी वजह से अभी जो ऑर्गेनिज्म है दैट विल इम्प्रूव, उसकी जो डिजीज थी दैट विल बी क्योर्ड। सो दिस इज हाउ जीनोम एडिटिंग इज बीइंग डन। अब बात करेंगे जो है आज की हमारी नोबेल लॉरेट्स इमानुएल कार्पेंटायर एंड जेनिफर ए डोडना, व्हाट डिड दे डू? सो जीनोम एडिटिंग में रिवोल्यूशन आया 2010-11 के बाद, जब इन्होंने जो है क्रिस्पर cas9 जेनेटिक सीजर्स डेवलप किए। ये क्या होता है कि क्रिस्पर cas9 इट्स जैसे हमारा न्यूक्लियस एंजाइम है, इसी तरीके से दिस इज वन ऑफ द न्यूक्लियसेस दैट बाइंड्स टू द डीएनए फॉर इट्स एडिटिंग। CRISPR stands for clustered regularly interspaced short palindromic repeats, यानी DNA में जो repeated sequences होंगी that is called CRISPR, and this CRISPR is basically a DNA targeting part, and this CRISPR it is actually a RNA molecule। तो RNA को use किया गया है to bind to DNA for its editing। तो CRISPR is an RNA molecule which binds to specific DNA bases थ्रू कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, जो आपने पढ़ी होगी। अब हमारे पास cas9, व्हाट इज दिस cas9? cas9 स्टैंड्स फॉर क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन 9। जब हमारा क्रिस्पर आरएनए जो है डीएनए पे अटैच हो गया, जिस जगह पे डिफॉर्मिटी है वहां पे अटैच हो गया, अब काम है कि वो वहां पे काटना है। तो दैट work is being done by this protein cas9. It is a protein which cuts the DNA. First CRISPR binds with DNA target part, and then cas9 cuts the DNA. So this CRISPR cas9 system, it was originally discovered in bacteria. तो यही काम जो मैंने अभी बताया था कि मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा। एमेनुएल कार्पेंटायर जो थी, शी वाज वर्किंग ऑन बैक्टीरिया। तो वहां पे उन्होंने देखा कि ये ओरिजिनली बैक्टीरिया, दे आर यूजिंग दिस सिस्टम टू डिस्ट्रॉय द इन्वेडिंग वायरसेस। अगर बैक्टीरिया पे कोई वायरस अटैक करता है तो बैक्टीरिया के पास एक अपनी इनेट इम्यूनिटी है, दैट इज दिस मैकेनिज्म, क्रिस्पर cas mechanism by which this bacteria destroys this invading virus. So moving on, if we look on the research that is being done in this area, in 2011 itself, during Emmanneul's Charpentier studies, she was studying the bacteria Streptococcus pyogenes, and when she was working on the bacteria, this bacteria is known to cause most harm to humanity. So she discovered this molecule that is called as TRAC-RNA, that is trans-activating CRISPR rRNA, and it is her work that showed that this RNA is actually part of bacteria's ancient immune system, CRISPR-Cas system, and इस सिस्टम की वजह से जो है वायरस का जो डीएनए है वो ब्रेक होता है। तो इन्होंने बोला कि क्यों ना इसको आगे जाके हम रिसर्च करें, देखें कि ह्यूमंस में क्या होगा। एंड उसके बाद ये मिली जो है जेनिफर को। आफ्टर दैट दे बोथ सक्सीडेड इन रिक्रिएटिंग दिस बैक्टीरिया जेनेटिक सीजर इन अ टेस्ट ट्यूब, एंड दे सिंप्लीफाइड द सीजर्स मॉलिक्यूलर कंपाउंड सो दे कैन बी इजी टू यूज। और 2012 में कार्पेंटायर एंड डोडना दे डिस्कवर्ड दिस क्रिस्पर cas9 जेनेटिक सीजर्स, और आज 2020 में almost 8 years later, they have been awarded for this discovery of CRISPR-Cas9 method of genome editing. So the tool they used that has contributed immensely to various important discoveries in basic research या प्लांट रिसर्च में। जब हम बात करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो हमने अभी बात की थी कि मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाए गए जिससे हमारा पैदावार बढ़ गया, क्रॉप वाज रेजिस्टेंट टू ड्रॉट्स एंड अदर पेस्ट्स एंड मोल्ड्स।
और मेडिसिन में भी इसका जो है बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन रहा है। क्लिनिकल ट्रायल्स वर डन फॉर वेरियस कैंसर थेरेपीज एंड मैनी इनहेरिटेड डिजीजेस विच आर जेनेटिक एंड आर इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, उनको अभी क्योर किया जाता है बिकॉज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विद दिस। सो इफ यू कैन सी दिस इमेज, this is that CRISPR-Cas9 system where this guided RNA, this is actually a RNA which binds to targeted site of the organism, and then this protein Cas9 protein, it actually cuts the DNA at that site. So this is a very interesting discovery और इसकी वजह से जो है it has taken life sciences into a new approach and in many ways are bringing the greatest benefits to humankind. और एक बात अगर हम यहाँ पे बताएं कि जैसे कि फीमेल नोबेल लॉरेट्स कम हैं, तो केमिस्ट्री में आज जो है दोनों की दोनों नोबेल लॉरेट्स दे आर फीमेल्स, तो फीमेल नोबेल लॉरेट्स के ऊपर इंफॉर्मेशन देना तो बनता ही है। तो अभी तक जो है टोटल देयर वर 5 फीमेल नोबेल लॉरेट्स, अब जाके 7 हो गई हैं। तो सबसे पहले इन 1911 मैरी क्यूरी वाज अवार्डेड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन and she was also awarded in 1903 for physics. In 1935 Ariane Joliot Curie, she was a daughter of Marie Curie. In 1964 Dorothy Crowfoot Hodgkin. In 2009 Ada Yonath, and in 2018 Frances H. Arnold. And now in 2020 we have our 2 amazing ladies, Emmanneul Charpentier and Jennifer A. Doudna, for developing CRISPR-Cas9 system of genome editing. So guys, with this I would like to sign off here. If you like this video, give it a like and make sure that you are subscribing to this channel, and yes, don't forget to press that bell icon to get all the latest updates. Thank you so much for watching this video.